Good morning everyone. How are you all? That's great. Anybody know about that? What we will discuss about today? Pollination. What is pollination? Do you know about that? No? So let us learn that what is pollination. Firstly, we will learn that definition of pollination. Pollination क्या है? Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower. Pollination means the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower. Do you understand? No? Let's see this. This is a flower. This is the stigma of a flower. These are the anthers. And these are the pollen grains. Let's learn. Stigma, anther, pollen grains. Transfer of the pollen grains from anther to the stigma is called pollination. What are the types of pollination? There are two types of pollination: self-pollination and cross-pollination. Self-pollination means, anybody know about self? Self means अपने आप, auto. Self-pollination. Self-pollination क्या है? This is the pollination is the same process in both of these steps, but the way is different in both. Self-pollination क्या है? Self-pollination means एक ही फ्लावर अपने ही एंथर से अपने ही पॉलन ग्रेन्स अपने ही स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करता है. मीन्स एक तो होता है कि सेम जो जेनेटिकली सिमिलर है, सेम फ्लावर अपने ही पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर करता है स्टिग्मा पे, खुद के ही फ्लावर पे. इसका अनदर वे ये है कि अगर ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी जाएगा पॉलन ग्रेन, तो ये उस पे जाएगा जो जेनेटिकली सिमिलर होगा, उसी पे वर्क करेगा. मीन्स अगर तो ये प्लांट एप्पल का है तो ये प्लांट भी एप्पल का होना चाहिए, तो ही ये पॉलन ग्रेन जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा. बट अगर ये प्लांट एप्पल का है और ये प्लांट मैंगो का है, then it will not work. This is called self-pollination. Self-pollination क्या है कि अपने the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of their own flower and on the flower which are genetically similar to them is called self-pollination. Understood? What is cross-pollination? self-pollination तो ये था कि अगर तो ये प्लांट एप्पल का है तो ये प्लांट एप्पल का ही होना चाहिए. क्रॉस पॉलिनेशन में सेकंड प्लांट है जो वो डिफरेंट हो सकता है, तो भी ये वर्क करेगा. अभी आप सोच रहे होंगे मैम ये ट्रांसफर कैसे करती हैं? ट्रांसफर ये अपने आप नहीं मूव होते,
इनके सम पॉलिनेटर्स होते हैं या एजेंसीज होती हैं जो हेल्प करती हैं एंथर को ट्रांसफर करने के लिए टू द स्टिग्मा। वो एजेंसीज क्या हैं? फर्स्टली मैंने आपको टीच किया है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? It is the transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of either the same or genetically similar flower. Understood? Cross pollination क्या है? Cross pollination is the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of genetically different flower. So ये था pollination and pollination की types. Till now we learn about what is pollination and the types of pollination. Furthermore, we are going to discuss about the agencies of pollination. Agencies of pollination. Anybody know about the agencies? That what are the agencies? Let me tell you. Agencies means which helps to transfer the pollen grains from the anther to the stigma to the another flower, from the one place to the another place. This is called agencies. Agencies means the things which helps us to transfer. वो things कौन सी हैं? Firstly, agencies are also of two types. First is abiotic agencies and second is biotic agencies. Abiotic and second is biotic. Abiotic में क्या है? Abiotic includes wind and water. जो abiotic agencies हैं वो कौन सी हैं? Wind and water. Means wind and water help us to transfer of pollen grains. For example, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है दूसरे फ्लावर पे। आपको पता है कि हम कोई प्लांट जो हम एक पॉट लेते हैं, एक प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है, कभी आपने देखा है कि वही सेम प्लांट कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद किसी और पॉट में होता है? वो क्यों होता है? इट मीन्स वो जो हमारे पहले प्लांट था उसका पॉलन ग्रेन किसी और पे जाकर जर्मिनेट हो गया, उसको हम पॉलिनेशन, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। सो वो पॉलिनेशन किसकी तरफ से हुई होगी? या तो वो विंड की तरफ से होगी या वाटर ने की होगी। अगर तो विंड, इट मीन्स अगर तो विंड ने किया तो हवा ने इस प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर दिया, तो वो जेनेटिकली सेम फ्लावर वहां पर जर्मिनेट हो जाता है। सेकेंड, वाटर इज ऑल्सो द एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन. Water also help us to transfer the pollen grains. For example, इधर किनारे पे कोई प्लांट लगा हुआ है, उसी का पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होके कहीं और जाकर गिर गया तो वहां पर भी वही प्लांट ओरिजिनेट हो जाता है. This is the abiotic agencies of pollination. Biotic agencies क्या है? Biotic agencies includes insects, birds, bats, snails, ants or snakes. These are the biotic agencies of pollination.
आपने कभी देखा होगा बटरफ्लाइज की हेल्प से भी पॉलिनेशन होती है। जब बटरफ्लाई एक फ्लावर पे आकर बैठती है तो उसका जो उस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसकी फीट पे जाकर चिपक जाता है, फीट से चिपक जाता है। जो वो दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठती है तब वो वहां पर गिर जाता है, जहां वहां पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। These are the biotic agencies. बटरफ्लाइज की हेल्प से, बैट्स की हेल्प से, जो स्नेल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, कभी कहीं लाइक पक्षी हमारे कोई फ्लावर पे या प्लांट के ऊपर आकर बैठ गया, वहां कोई पोलन ग्रेन लगा हुआ था, उसने वो उठा लिया, बाय चांस वो कहीं गिर गया, वहीं वो पोलन ग्रेन का जो पॉलिनेशन का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। So, do you understand that what we learned today? What things we learned today? Today we learned about the definition of pollination. Definition of pollination क्या है? Pollination means transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower. Next we learned about the types of pollination. कौन सी types हैं? Cross pollination and self pollination. Cross pollination क्या होता है? Which transfer the pollen grains from the anther to the stigma of the different flower. Self pollination क्या है? Which helps to transfer pollen grains from the anther to the stigma to the same flower or to the genetically similar flower. These are the types of pollen grains. Next we learned about this topic is agencies of pollination. Agencies of pollination. पॉलिनेशन की दो तरह की एजेंसीज होती हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक इंक्लूड्स insects, birds, bats, snakes, ants and snakes. Abiotic agencies includes wind and water. So, children, these are the topic of pollination which we learned today. So, this is all about the today's lecture. Thanks. Have a nice day.